Do you want to see magic? And this is how it became a winter wonderland, right here in Chitkul. मैं हूँ नेहा and welcome to my channel Girl in the Myths, Kinnaur series. As you saw in the previous episode, we reached Chitkul happily, enjoying the meadows and the landscapes on day 5 journey. ये जर्नी तो आपने देख ली. अब बात करते हैं यहाँ के स्टे ऑप्शंस की और हम कहाँ रुके. तो हमने जोस्टेल पहले से ही प्री बुक करा के रखा था, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है. यू गेट ऑप्शंस फॉर अ प्राइवेट रूम और अ डॉर्म एंड यू कैन चूज व्हाटएवर सूट्स यू. आई विल मेंशन द कॉस्ट हियर बिकॉज ये डायरेक्टली बुक हो सकता है जोस्टेल की साइट से, तो आपको यहाँ पे मिनिमम हैसल्स होते हैं. प्लस द फूड हियर इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एक्सट्रीमली वार्म पीपल. व्यू की बात करें तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस, ट्रस्ट मी. जोस्टेल से व्यू बहुत ही खूबसूरत है, बट यस, जोस्टेल इज़ most of the time booked. So if you're planning to stay here, please make sure you validate your bookings. और हाँ, we were so lucky to witness the snowfall. Lucky इसलिए क्योंकि लास्ट डे पे सुबह 6 बजे उठते ही कुछ और ही नज़ारा था हमारे सामने. There are beautiful wooden houses here that are turned into homestays. So definitely come and stay here to have that extremely cultural experience. ये बहुत सारे homestays आपको किसी travel site पे नहीं मिलेंगे, तो आप यहाँ पे आकर इनको book कर सकते हैं. But yes, of course, if you're coming with your family और आप एक peak season में आ रहे हैं, then please try and pre-book, even though the options might be limited online. If you are looking for a 5-star resort here, this place is not for you. You will find modest hotels and homestays here, and so you should expect. As soon as we checked in Zostel, we didn't waste any time and we headed out to explore the place, which comes to the next thing on our list, which is the things that you must do when you're in Chitkul. Number 1, eat at the Akhri Dhaba. Yes, you know, and that's super popular here, the Hindustani Akhri Dhaba, where the food is awesome and the view is breathtaking. Take a look. वैसे तो चितकुल से भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रैकिंग के, एज यू माइट हैव ऑलरेडी नोन. वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द विलेज ऑन फुट एंड वॉक थ्रू द नैरो गलीज of this village with less than 100 houses. Actually, the people here are friendly and will never shy away from helping you find your way. So a must thing to do here. यहाँ पे लोग अभी भी अपने ट्रेडिशनल वेज फॉलो करते हैं, वुड इकट्ठा करना और अपनी केटल को चराना. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट यू विल फाइंड जस्ट इन दिस विलेज. सो डू दिस विलेज वॉक एंड आई एम श्योर यू विल नॉट रिग्रेट इट.
Next, you should go to the Mathi temple and pay your respects there. इसके लिए आपको 15 मिनट का हाइक करना पड़ेगा विलेज के बीच में से, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी ऑल वर्थ इट. द माथी टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू द लोकल गॉडेस of the Chitkul folks called Mathi, and the temple dates back to 500 years. Pretty intriguing, right? And at evenings or at sunrise, go up to the Baspa river. वहाँ पे बैठकर literally you can see the river emerging from the mountains. It is so picturesque. It's out of a painting, really. Like I can sit here forever. तो हम जा रहे हैं छोटी सी हाइक पे रिवर के पास. वी वांट टू गो देयर एंड मे बी सिट फॉर अ व्हाइल एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल व्यूज. But I see here that you can just walk up and go to a homestay. At least जिस सीज़न में मैं आई हूँ उस सीज़न में तो मिलता है. मैं आई हूँ अप्रैल में, तो we getting everything, like all the homestays are available, and even on the way you can choose to have a halt at Sangla, or you can stay at Raksham. There are all beautiful villages. You can stay there for one night and then come here, because I feel that चितकुल में ज़्यादा दिन होने चाहिए क्योंकि ये इतना ब्यूटीफुल है. सेकेंड इज़ रक्षम में भी इतने होम स्टेज देखे हमने, लाइक हर पूरे रोड पे होम स्टेज बने हुए थे, राइट? और कहाँ थे होम स्टे? सांगला में, राइट? सांगला में इतने ब्यूटीफुल, मेन सांगला में, नॉट, हम तो बत्सेरी विलेज में रुके थे जहाँ पे आप आके ले सकते हो, और वेरी चीप बाय द वे. सो दैट्स फॉर नाउ. लेट्स लुक एट द व्यूज़ एंड एन्जॉय द सन. मस्त मौसम हो रहा है, धूप निकली है एज यू कैन सी, और पानी बहुत ठंडा है. मैंने तो पैर नहीं डाला, ये पेजेस में पैर डाला इसमें, बट बहुत ही अमेजिंग मौसम हो रहा है, और व्यू तो इतना अमेजिंग है. अगर एक बार आप दिखाते व्यू. Last but not the least, go to the ITBP post. Admire the conviction and the courage of our soldiers monitoring in such harsh conditions. Salute. So many times I have seen people coming here just for a day, और वो 2-3 घंटे में वापस चले जाते हैं. But I would definitely recommend you to at least stay here night or two. Honestly, I could have stayed here अगर यहाँ पे अच्छा इंटरनेट होता तो. इंटरनेट से याद आया, coming to some important facts about this place that you need to know. Only BSNL works here? Well, barely. If you do not already hold a BSNL SIM, then it will take you around 48 hours to get a new one here in your name. आपको सिम कार्ड रेंट पे भी मिल सकता है यहाँ पे BSNL का, जो कि यूजुअली आप जिस प्रॉपर्टी में रुकते हैं वही हेल्प कर देते हैं आपको लेने में. यहाँ पे जो मार्केट प्लेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो यू विल गेट ऑल योर बेसिक फूड and necessity, but do carry your medicines with you at all times, because you might not find it here. Take your precautionary measures here, because AMS
आपको हिट कर सकता है यहाँ पे, ये इसका एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है. तो प्लीज़ कैरी मेडिसिन्स, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दैट टू. People here live simple and do not understand your city antics. So please respect the place and refrain from playing loud music. And yes, do not litter. Take your garbage with you. Travel responsibly. Hope you've liked my Kinnaur series. If you do, then please hit that like button. Subscribe to my channel. This is Neha, a girl in the midst, signing off. Keep traveling. Ciao.